And I'll tell you what, you'll enjoy listening to her. So help me bring up Kajal Ajmani. I'm sure all of you have enjoyed so far. Very good. I'm going to talk a lot of things from women's perspective. मैं एक बात आपको ज़रूर क्लियर करके बताना चाहती हूँ कि हम लोग we are married, so I'm going to talk a lot of things from couples perspective. लेकिन वो don't use that as an excuse for singles. मतलब अगर आप मैरिड नहीं हैं तो भी आप ये बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं, बिकॉज हमारे अपलाइन डायमंड जो हैं कुमार शिवरामकृष्णन, he went emerald as a single. There is Rocky Covington, he's an EDC, he's a single still. So you can still build this business alone, but what we were trying to say is if you are married, then you should get your husband or wife involved in this business because that will definitely benefit you. मैं अपनी बैकग्राउंड बता देती हूँ आपको. मैं यहीं पर बॉम्बे में ही, मुंबई में ही पली बड़ी हूँ. यहाँ पे आई डिड माई MBA फ्रॉम USA. उसके बाद में मैं वापस आकर के मैंने यहीं पर काम किया. आई वर्कड एज अ कंप्यूटर कंसल्टेंट. इनफैक्ट सुगीत और मैं वी मेट एट आवर वर्क. मैं बॉम्बे से हूँ, ही इज़ फ्रॉम कानपुर, और वी मेट इन मद्रास. तो वी बीन मैरिड फॉर 7 years और हमारी एक लड़की है जिसके बारे में सुगीत आपसे बता रहे थे, उसका नाम पल्लवी है. Within a year and a half of joining this business, I was able to quit my job. Now I know कि इंडिया में ये काफ़ी सारी लेडीज़ को ऑलरेडी ये चॉइस होती है कि वो काम पे नहीं जाती, बट आई नो दैट कॉस्ट ऑफ लिविंग इज़ गोइंग अप. तो ज़्यादातर फैमिलीज़ में ये हो रहा है कि वाइफ इज़ ऑल्सो गोइंग टू वर्क, और दोनों हस्बैंड वाइफ काम करते हैं. तो आई नो दैट दिस इज़ प्रॉबली अ चॉइस दैट some of the ladies would want, and I know that काफ़ी सारे men they are excited about quitting their jobs and doing this business full time. And honestly, it's always good to be your own boss, and that's why I quit my job within a year and a half of joining this business, because this business had helped us replace my income. I'm going to talk a lot of things from इस business में ladies का क्या role होता है. मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारे जो अपलाइन क्राउन एम्बेसडर हैं बिल एंड पेगी ब्रिट, वी आर ऑल फॉलोइंग द ब्रिट सिस्टम, एंड व्हाट बिल ऑलवेज टीचर्स इज दैट अ वुमन इज वेरी पावरफुल. इनफैक्ट वो ये कहते हैं कि जब भी वो किसी कपल को देखते हैं तो वो हमेशा उसकी वाइफ को ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि शी इज़ गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस बिजनेस, एंड दैट्स व्हाट आई वांट ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड. नाउ अगर आप यहाँ पर सिंगल हैं तो भी आपके ग्रुप में कपल्स हो सकते हैं. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, बिकॉज यू आर गोइंग टू टीच व्हाट वी आर टीचिंग टुडे टू योर ग्रुप. ओके, सो अंडरस्टैंड इट फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव. टिपिकली वुमेन आर द वंस विद द ड्रीम. सुगीत जैसे क्राउड से पूछ रहे थे 50,000 आप किस तरह से स्पेंड करेंगे, एंड आई प्रॉमिस यू कि अगर आप यही क्वेश्चन अगर लेडीज़ को पूछे ना तो उनके पास एक बड़ी सारी लिस्ट होगी, और दे विल टेल यू एग्जैक्टली हाउ दे विल स्पेंड दैट मनी. इंडिया इन USA वी हैड जब हम लोग रूबी लेवल पे थे तो इन गाला ऑर्गेनाइजेशन वी हैड अ रूबी शॉपिंग स्प्री, और सब हस्बैंड्स ने ना अपने वाइफ को $1,000 दिए शॉपिंग के लिए, और ये कहा गया उनसे कि ये $1,000 आप घर पर नहीं स्पेंड कर सकते, हस्बैंड पे स्पेंड नहीं कर सकते, और बच्चों पे स्पेंड नहीं कर सकते. इट हैज़ टू बी टोटली ऑन यू. तो मतलब और ये कहा गया कि अगर नहीं स्पेंड करोगे तो जो बाकी के पैसे होंगे इट गोज बैक टू द हस्बैंड. नाउ हु गिव्स इट बैक टू द हस्बैंड? तो सुगीत वाज लाइक हैप्पी. सुगीत थॉट कि, और वी वेंट टू वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव मॉल इन न्यू जर्सी. बहुत क्लासी मॉल है वहाँ पे, और बहुत बड़े बड़े एक्सपेंसिव स्टोर्स हैं वहाँ पे. तो सुगीत थॉट कि $1,000 थोड़ी देर तक चलेगा, मतलब मैं थोड़ी देर तक तो बिजी रहूँगी. आई वेंट इन वन स्टोर विच इज़ कॉल्ड नीमन मार्कस. वहाँ पे 3 फ्लोर हैं, और जो 3rd फ्लोर है वहाँ पे सारे डिज़ाइनर के ड्रेसेस होते हैं, और वहाँ पे यू गेट ट्रीटेड रियली रॉयली. तो मैं वहाँ पे गई और 15 मिनट में मैंने एक ड्रेस चूज़ कर ली, और वो सिर्फ जैकेट था. इट्स कॉल्ड सेंट जॉन्स. आई डोंट नो इफ यू गाइज हैव हर्ड ऑफ दैट, बट उनकी ड्रेसेस बहुत बहुत प्यारी होती हैं, एंड आई फील कि एवरी लेडी शुड हैव वन सेंट जॉन्स. तो वन जैकेट आई पिक्ड अप एंड दैट वाज फॉर $1,000. तो मैं वापस बाहर आ गई और सुगीत वेट कर रहे थे. मैंने कहा मेरी तो शॉपिंग हो गई. कहते इतनी जल्दी कैसे हो गई तुम्हारी शॉपिंग? मैन आई शोड हिम द जैकेट, सो ही गेव मी सम मोर मनी देन. But you need to be treated like that. What I'm trying to point out is you can create a lot of choices. You can fulfill whatever is whatever may be your dreams. अगर आपका ड्रीम छोटा हो
तो वो भी आप फुलफिल कर सकते हैं. अगर आप इफ यू जस्ट वांट टू क्रिएट जस्ट 50,000 से अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो यू कैन डू just that with the DD income you can create that income. अगर आपको you want to create more income, then you can go up to diamond and beyond and create larger incomes. So it's important for the women to be in the business because they are the ones who have very crystal clear dreams, and they are the ones who will keep their husbands motivated and excited. They are very good in building relationship. आपने कभी नोटिस किया कि औरतें तो बाथरूम भी साथ में जाती हैं, मगर आदमी लोग ये नहीं बोलते एक दूसरे को कि चल चल मैं बाथरूम जा रहा हूँ तू भी आ मेरे साथ में, ऐसे आदमी लोग कभी नहीं बोलते, लेकिन औरतें हमेशा करती हैं ऐसे. दे कैन टॉक लाइक 5 minutes और एक दूसरे के बारे में वो इतनी सारी जानकारी हासिल कर लेती हैं. आदमी लोग मतलब चाहे कितनी देर बात कर ले, लेकिन दे डोंट रियली गेट टू नो ईच अदर, बिकॉज दे टॉक ऑन द बिगर इश्यूज, the world economy and things really that don't really matter. They talk about that kind of stuff, but women, they talk about the issue, and it's really important for your wife to be present with you. I'll give you the reasons why. जब हम किसी से बात करने जाते हैं बिजनेस के बारे में, अगर हमारे बिजनेस में say somebody, there is a couple, अगर उनको कोई चीज बॉदर कर रही है तो वो आदमी typically he won't talk about it, but if I'm with Sugit and I'm there, I'm talking about it, I can find out. See, women are the one who can really know the pulse of your business, because औरतें एक दूसरे के साथ में बात करती हैं and they can really get to know कि मतलब वो the wife will typically open up and tell कि मेरी ये प्रॉब्लम है, मुझे बच्चे के साथ में ये प्रॉब्लम हो रही है, इसी कारण से मैं मीटिंग्स नहीं आ रही हूँ. औरतों की इस बिजनेस में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है इसके बारे में I'll just tell you a little bit. One of the things that I do, जब हम बिजनेस में शुरू में आए तो हमने अपने अपलाइन से ये सीखा कि इट्स जस्ट लाइक अ कंपनी, हर कंपनी में डिपार्टमेंट्स होते हैं एंड एवरी डिपार्टमेंट हैज इट्स ओन हेड. मतलब जस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी कांट रन द होल कंपनी. और इस बिजनेस में मैं और सुगीत पार्टनर्स हैं, तो देयर इज पार्ट ऑफ द बिजनेस दैट सुगीत डज, मतलब प्लान दिखाना, लोगों से बातें करना, काउंसलिंग करना, ये सब सुगीत की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं. और मैंने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले ली थी, दैट इज प्रोडक्ट ऑर्डरिंग, वॉल्यूम, टॉकिंग टू पीपल, कीपिंग इन टच विद ऑल माई डाउनलाइंस. कम्युनिकेशन इस बिजनेस का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है. यू हैव टू मेक श्योर दैट यू कम्युनिकेट. अब इसमें व्हाट इज द काइंड ऑफ कम्युनिकेशन दैट आई डू. हमारा बहुत बड़ा ग्रुप है और ladies से बात करना, I call them like I'm at home during the day. There are a lot of ladies who are at home, तो उनसे मैं दिन में फ़ोन कॉल्स करती हूँ, बात करती हूँ. Now मुझे कई बार ये क्वेश्चंस लोग पूछते हैं कि क्या मैं कितना टाइम मुझे उसके घर में जाके उससे मिलना होगा या मैं कितना टाइम उसके साथ में स्पेंड करूँ. My answer to that always is कि you should spend quality time. People should know in your group that you really care for them. They should know you as a caring upline. वो आपको इस तरह से अगर वो ये सोचे कि अगर आप हम उन्हें सिर्फ इस वॉल्यूम जिस दिन करना होता है सिर्फ उसी दिन कॉल करके अगर ये कहें तुमने वॉल्यूम किया कि नहीं, तुमने प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए नहीं, कि तुम्हारी कितनी वॉल्यूम हुई, तो दे आर नॉट गोइंग टू लाइक यू वेरी मच बिकॉज दे गोइंग टू थिंक दैट you are treating them as a volume generating machine and nobody likes to be treated that way. तो आप जब उनसे बात करें तो उनके बच्चों के बारे में पूछें और उनकी try to get to know them at a personal level. थोड़ी non business बात भी कर सकते हैं, that's good, but you don't have to talk for like hours with one person. It's just a small talk that you can do and really keep in touch. You don't have to call that person every day, मगर on a regular basis आप अपनी लिस्ट बना लें हर दिन कि मैं आज इनको कॉल करूंगी. मतलब एक दिन में आप 100 लोगों को तो कॉल नहीं कर सकते, उनसे बात नहीं कर सकते, लेकिन इफ यू डिवाइड योर हर वीक में आप इसको कॉल करें तो you'll find it that being organized that way helps. You may not have to buy an organizer, मगर आप एक छोटी सी डायरी रख करके उसमें हर दिन की आप अपनी प्लानिंग करें. Because remember, now you're not just a housewife, you're not just a professional, you're a business owner. So you have certain responsibilities as a business owner to help your business husband in building this business. Along with this, I also want to point out that you don't have to have a certain kind of personality to build this business. Now, सुगीत की personality थोड़ी अलग type की है, मेरी personality थोड़ी अलग type की है. हमारे business में ऐसे लोग हैं जो, the wives or even the husbands are like kind of reserved personality होती है किसी की, कोई shy type के होते हैं, कोई बड़ा जैसे timid type की personality होती है. तो आपको उनको ये बताना ज़रूरी है कि they can all build this business.
You don't have to have a certain aptitude for business to build this business. That is the beauty of our business. Anyone can do it. You don't have to have a certain qualification to do this business. If you have a dream, you can build this business. Okay? I want to also cover a little bit of the basics. Sugit talked about dressing up, and India mein ladies ke to ye problem hi nahi hai because they all dress so well. Salwar kurta and sari is a business, business code, dress code here. But I just want to cover up on a couple of points here. Is that you may already be doing it, but this is something that you could teach to others. आप जब typically meetings में बैठते हैं तो जब आप when you're sitting quiet for a long period of time, it's typically that the temperature in your mouth, आपके मुंह में जो टेम्परेचर होता है वो बाहर के टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा होता है, तो इसीलिए मुंह से स्मेल आती है. लेकिन वो खरीद करके हमेशा अपने पर्स या पॉकेट में रखें. तो जब आप ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि आप जब किसी से बात करें और अगर आपके मुंह में से स्मेल आ रही है जो आप रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं, तो the person could be he could be put off a little bit. I hope I'm not embarrassing anybody, but just something that I have learned in the business, and it's important. In fact, I always carry mint in my purse. Glister is sweet shot. I don't know if you guys have available. मगर जब available हो जाएगा तो आप अपने पास sweet shot जरूर रखिएगा. You have to respect every religion. You have to respect everyone's wishes. And some ladies, they might not like a handshake. तो आप हर किसी से जोर से जब आदमी लोग अगर shake hand करते हैं तो आदमी से जिस तरह से shake hand करते हैं उसी तरह से ladies को भी मत treat करो, क्योंकि ladies' hands are softer. That's not. It's like and pretty soon the ladies say, I don't want to shake hand with anybody, because can you imagine अगर मैं यहाँ पे हर किसी से shake hand करूँ तो मेरे तो हाथ दुखने लग जाएंगे अगर इस तरह से shake hand किया जाएगा तो you have to be careful. You have to treat a lady nicely. You have to treat a lady like a lady. And the other thing that I wanted to say was, I'm sure you guys are already doing it because in India we've always been taught that that you should treat people with respect. But make sure that when you're talking to a lady, keep a safe distance. This is particularly अगर आदमी किसी आप डाउनलाइन किसी अगर लेडी से बात कर रहे हो तो हमेशा एक सेफ डिस्टेंस, एकदम उसके पास में जाके बात ना करें, क्योंकि she wouldn't like it, and some people might find it just too overwhelming, and they might just get put off. Little things like that. And I'm again, as I'm saying, I know that you probably are already doing all these things right, but you need to teach this downline. Is it helping? Yes. Okay, good. Okay, the next thing that I wanted to point out is power of association for women. Husband और wife का हर जगह पे होना बहुत ज़रूरी है, because your excitement level, and your education level in this business. See, इस business में आपको अपने आप को educate करना पड़ेगा. जैसे हम लोग पढ़ते हैं तो when you're doing your degree तो आपको college जाना पड़ता है, school जाना पड़ता है. उसी तरह से इस business में भी आपको अपने आप को educate करना पड़ेगा, क्योंकि हम सब जब इस business में आते हैं तो zero level पे आते हैं और फिर धीरे धीरे through the system we learn how to build this business. Now अगर सिर्फ if husband comes to the meeting तो wife is not getting the same education level और आप दोनों का excitement level is not going to be at the same level. Your enthusiasm level is not going to be at the same level, because वो अपने घर में she must be facing some other kinds of problems और आप यहाँ पर आ रहे हैं, you're getting excited because you're associating with people, so your enthusiasm level is high and she might not share that. तो उनका साथ में होना ज़रूरी है. Now Sugita is talking about with kids, we've made arrangements for Pallavi here, and I know that a lot of you, आपकी फैमिलीज यहीं पर कहीं पर आसपास में रहती हैं या कोई रिलेटिव्स होंगे तो उनके पास में आप अपने शायद बच्चे छोड़ देते हैं. हमें तो ये भी ऑप्शन नहीं है यूएस में. दैट मीन्स आई हैड टू फाइंड अ बेबी सिटर फॉर माई बेबी. नाउ पल्लवी को फ्रॉम बर्थ मुझे डॉक्टर ने ये कहा था कि पहले 2-3 वीक उसे बाहर ना निकालें घर से, बट सिंस देन शी इज बीन विद बेबी सिटर्स. तो बेबी सिटर की लिस्ट भी डेवलप करना, we always tell people कि make a list of 10 babysitters. अब I know this is a new concept in India, but काफी सारी wives are working now, so I'm sure they're leaving their children at some kind of a babysitting service. जिनकी कोई family नहीं है, जिनकी मम्मी डैडी नहीं है जो उनको help नहीं कर सकते, I'm sure they're leaving their children with some babysitters. In fact, it's a very good way of contacting. मैं न्यू जर्सी में जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहाँ पे एक एरिया है एडिसन, हम उसे देसी एरिया कहते हैं, ओक ट्री रोड. और हम लोग जहाँ वहाँ पे ग्रोसरीज करने जाते हैं तो वहाँ पे लाइन में जो लोग खड़े रहते हैं उनसे वी स्ट्राइक अ कॉन्वर्सेशन, हाय हेलो कहते हैं. और वन ऑफ माई ओपनिंग लाइन इज
you know what, I'm looking for a babysitter for my daughter. Do you know of anyone? And then I strike a conversation और फिर उनका number ले लेते हैं हम. You know, and that's how we build our list. So it's a very good way of contacting, okay? And what I would recommend is आप अपने neighbors जो मतलब जो लोग अगर जिनको आप थोड़ा बहुत जानते हैं या even if you feel कि मतलब ये अच्छा couple है और वो अगर आपके business में ना हो, वो अगर आपके customers हों या ऐसे किसी को जानते हो जो who wouldn't mind looking after your children, जिसके उनके अगर खुद के बच्चे हैं तो आपके बच्चे बड़े जल्दी घुल मिल जाएंगे उनमें. और make sure that you know you give them some kind of compensation for looking after your children. whether अगर आप वो पैसे बताएं तो पैसे दे दें. Somebody told me that they've been giving amway products to them every month. So that's a very good way of compensating. You know, volume generate होता है, PV BV में मिलता है. One last thing about this subject is don't worry if your children cry at the babysitters because they are very flexible. पल्लवी ने हमें बहुत परेशान किया बीच में, लेकिन वो फिर सेटल हो गई उस बेबी सिटर के साथ में. तो you know, mothers, I know that it hurts you, but they are all fine ultimately. Okay, you're doing this business for your children after all. Next subject that I want to talk quickly about is volume. Products खरीदेंगे, ये you can use it for sharing with your friends and family, you know, for developing a customer base for yourself. Now, there is a reason why I'm saying that you should get all your products. It's a very nominal amount of investment to get started in a business truly. And उससे क्या होगा कि आप सारे जो products खरीदेंगे उससे आप यूज़ करना शुरू करेंगे और उससे आप में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि आप देखेंगे कि बिजनेस के प्रोडक्ट्स की क्वालिटी कितनी अच्छी है और दीज प्रोडक्ट्स आर कॉन्सेंट्रेटेड. तो आपको अपने प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ी जानकारी आपकी बढ़ेगी और दैट विल बिल्ड अप योर कॉन्फिडेंस एंड इट इज़ द ईजीएस्ट वे ऑफ बिल्डिंग क्रेडिबिलिटी ऑफ योर बिजनेस. मेरे फादर की जो शॉप थी दैट वाज ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स. तो मिल्क हमारे घर में हमेशा अपने दुकान से ही आता था. वी नेवर वेंट अराउंड शॉपिंग फॉर मिल्क. यू नो, इट मेक्स नो सेंस, राइट? आई मीन, खुद का बिजनेस है तो अपने बिजनेस से ही प्रोडक्ट्स खरीदने चाहिए. एंड दिस इज व्हाट रियली आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई पीपल कॉम्प्रोमाइज ऑन दिस. अगर खुद का बिजनेस है तो आप वो प्रोडक्ट्स दूसरे से क्यों खरीदेंगे? अगर आपके हमारी दुकान पे जो वो मिल्क बिकता था दैट वाज अ लिटिल बिट मोर एक्सपेंसिव देन अ नेबरिंग शॉप, बट पीपल न्यू दैट द क्वालिटी ऑफ आवर शॉप was a lot better than the other one. तो जब लोग ये पहचान जाएंगे कि आपके products ज़्यादा अच्छी quality के हैं, they won't switch to somebody else. But you have to point that out to them. But the first thing you have to do is, हम US में ये कहते हैं, become your own best customer. And that is by making sure that you say 100% loyal to your own business. आप अपने business पे cheating करोगे तो आपकी downlines आपको देखेंगी ये करते हुए और वो आपकी वही habits duplicate करना शुरू करेंगी. Duplication is the basic of this business. इस बिजनेस में हर चीज़ डुप्लीकेट करते हैं लोग, आपकी हैबिट्स डुप्लीकेट करते हैं. आप जो प्रोडक्ट्स खरीदेंगे वही प्रोडक्ट्स आप देखेंगे कि आपके ग्रुप में ज़्यादा मूव होगा, आप जिसके बारे में ज़्यादा बात करेंगे. तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू सेट द राइट एग्जाम्पल विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सीखें कि किस तरह से वॉल्यूम करना चाहिए. हर किसी को हमारे प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है. आई टेल यू समथिंग, दिस आई बीन टेलिंग टू एवरीबॉडी. हमारे प्रोडक्ट्स, यू हैव टू नो दिस एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस की वर्ड्स.